अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, जैसे कि आपको इस पॉडकास्ट के बारे में मैं थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस पॉडकास्ट का मकसद क्या है, और इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना है, और जो सक्सेस स्टोरी हमारे पास इस वक्त छुपी हुई हैं उनको मुझे यहाँ पे लोगों के साथ शेयर करना है, जो इस वक्त बहुत ही काबिल लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो एकेडमिया में हो। उन सबको मुझे यहाँ पे इनवाइट करना है और उनसे कुछ हम लेंगे रहनुमाई आपके लिए। अच्छा जी, आज का जो बड़ा एक कंफ्यूजिंग सवाल जो है वो है कि चूजिंग बिटवीन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के हवाले से लोगों के दरमियान में मैं देख रहा हूँ, बच्चों के दरमियान में, पेरेंट्स के दरमियान में कंफ्यूजन है यार कि विच प्रोग्राम इज राइट फॉर माय किड। तो इस सिलसिले में मैंने जो है वो जब मैं अपने गेस्ट को जब ढूंढ रहा था कि भाई मैं किस एक्सपर्ट को मैं बुलाऊं अपने नेटवर्क में, तो मैंने लिंक्डइन पे भी मैं सर्च कर रहा था, अपने अपने नेटवर्क में फेसबुक पे भी चेक कर रहा था। तो मुझे कोई इससे अच्छा बेहतर गेस्ट नजर नहीं आया। वो हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद नासिर जफर नासिर साहब, जो कि इस वक्त फिलहाल डीन हैं कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस यूनिवर्सिटी के। और उन्होंने रिसेंटली अपना टेन्योर एज अ वीसी, उन्होंने 3 इयर्स का जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट किया है। और मैंने देखा कि ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन गेस्ट होंगे और हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और इसके अलावा मैंने इनको जब मैं देख रहा था, तो इन्होंने कुछ फास्ट के अंदर भी काफ़ी जो है वो डिपार्टमेंटल हेड रह चुके हैं, कंप्यूटर बड़ा नाम है इस इदारे का। तो आइए इनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है वालेकुम डॉक्टर साहब? अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमारे प्रोग्राम को, आपने प्रोग्राम के अंदर आपने दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उनसे मेरे नाजरीन जो है वो बहुत मुस्तफीद होंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैंने तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ होगा आपके पास बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मैंने मुख्तसर सा बता दिया है। आप अगर कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहें, जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी जर्नी है, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और अब माशाल्लाह से आपने अपना एक टेन्योर वाइस चांसलर का भी कंप्लीट किया 3 इयर्स का, नाउ यू आर सर्विंग एज अ डीन माशाल्लाह से। और इससे पहले आपने कंप्यूटर का जो मैंने सुना कि जब भी मैं जिक्र कर रहा था कि भाई मेरे गेस्ट आने वाले हैं जफर नासिर साहब, तो उन्होंने कहा कि वही क्या नाम है, फास्ट वाले। तो थोड़ा सा जरा बताइए, जरा अपना कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो प्लीज। Hafiz Rahman Sahab, thank you so much वेलकम। for inviting me in this important program. I think it's a rare opportunity for me to communicate with the younger generation who would ultimately become the backbone of this great country, Pakistan. In fact, I've been thinking all along for some time that I should find an opportunity where I should be able to talk to my young guns who would eventually have the reign of this country. I mean, and to somehow educate them about the upcoming opportunities, especially in the field of information technology. Uh, Information technology has been a great buzzword, and we do talk about it from time to time. But the very context of information technology has not been properly understood by the people. We talk about computer science. We also talk about software engineering. There is a general discussion sometime on computer engineering. And I think it would be very important on the part of the senior people, especially who are working and who are educating in different institutions, to be able to properly convey to the younger generation the difference between, the three different areas, uh, namely computer science, software engineering, and computer engineering, because it would surely help them to properly comprehend the very context of the field of information technology. जी।
Information technology entails all these three elements which we जी, have discussed and जी, talked जी सर, about. And of course, we'll throw more light on that. जी सर, So the fundamental thing is, what is the difference in different programs which are being offered by universities all over Pakistan, rather all over the world. But especially in our case, I think we got to create resources and in a way so that they're able to contribute. जी, बिल्कुल, We don't want to waste resources. The resources are precious in Pakistan. जी, बिल्कुल, And moreover, keeping in view the economic conditions prevailing in this country, I think we have to properly guide the parents as well. जी, बिल्कुल, बिल्कुल, They are the real investors and contributors जी, in बिल्कुल, the upcoming generation. right, So, to begin with, what is computer science? जी, Computer science, in fact, provides the very logical and theoretical context in the field of computing. And without computer science, nothing moves in computing. I mean, that is my slogan in general. I So see, you got to understand, the very context of what computer science is all about. Well, computer science entails a number of aspects. For example, like algorithm. I mean, we talk about algorithms. We talk about data structures, for example. It also entails, the principles, the very principles. I'm emphasizing the principles for software development and software designing. So, there are many other things, like, for example, just to make the younger generation understand the difference very clearly. For example, the programming languages. Now, can we, perform any aspect in computing without programming? Can we develop any, software application without programming? So, programming is a fundamental aspect. Okay. So, who is the creator of the programming languages? It is the person of computer science. I see, So, computer scientist is the one who will create, or who is the creator of programming languages. And you know that right from the inception, variety of languages have been developed. okay, Nowadays we talk about Python language a lot, but when we started, teaching computer science in FAST in the year, 1987, okay, under the dynamic leadership of Professor Dr. Lal Qureshi. So we started with Pascal. Pascal, can you imagine? But now nobody knows about Pascal. Pascal has been a passing word now. correct, very true, doctor. So things are moving at such a fascinating pace that it has never been heard of. And we keep on learning new contexts, new programming languages, etc., etc. And that is the real contribution of the. डॉक्टर वहीं से स्टार्ट जी डॉक्टर So I think it's important that we properly perceive the very scope and the context करेक्ट करेक्ट of different fields which are available to our students, especially in computer science, software engineering, and computer engineering. But as I told you earlier, that computer science basically forms the basis, logical base, theoretical base. Without which we cannot comprehend what software engineering is all about, or what computer engineering is all about. Okay. Because computer scientist is the catalyst of all these developments. So as the example I was just referring to, that the very development of different programming languages forms the basis for software development. There are a variety of techniques and technologies which are being harnessed every day. Okay, so
Who is the one? Who is the architect? Who is promoting this context? Well, it is the person of the computer scientist. Okay. So, computer scientist is the one who would promote, software development and software design principle. I'm talking about principles. Principle. ठीक है, बिल्कुल Okay. सही, बिल्कुल right. We will throw more light on the role of the software engineer, of course. There are roles which overlap. Okay. But the initiative comes from the person of the computer scientist. I mean, he's the one who is eventually promoting, areas like data analytics. Okay. And eventually we are talking about more and more about different algorithms. For example, machine learning. So machine learning is one of the areas which attributes its development to the person of the computer scientist. Okay, I see. Right. We are developing different AI-based model, and imagine that AI has its, development totally, indebted to the person of the computer scientist. So AI-based tools development, who is the person behind it? Computer scientist. Okay. So you name any development in computer science and then you will have no other option but to attribute it to the person of the computer scientist. I see. डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आप मुझे थोड़ा सा ज़रा ये बताइए कि क्योंकि बड़े आप माशाल्लाह से आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत एप्रोप्रिएट हैं उसको करने के लिए, आंसर करने के लिए. हाउ कैन वी इंक्लूड दिस कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इनटू बिजनेस स्टडीज के अंदर हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड. आपने कहा कि जी बुनियाद है ये. Can you suggest us, please? I'll just give you an example. Sure, sir. That how computer science, because computer science is something different. Correct. And technology is different. Science is different. Technology is an application of computer science or any science. Okay, right. When we talk about technology, it's an application. That means there is a science behind it. Science behind it. Okay, beautiful. Okay. Beautiful. So we cannot imagine technological development without scientific development. Beautiful. Okay. Beautiful. Yeah. Beautiful. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे ये कहें कि क्योंकि दैट्स द नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट दिस कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें विद द बिजनेस, अगर हम बिजनेस की जो करिकुलम है उसके अंदर, क्योंकि आपका मैंने देखा है आपको एनटीसी के साथ भी आपका बड़ा अच्छा आपका रहा है, आप उनके साथ रहते हैं, और पीईसी के साथ भी आपका बड़ा अच्छा रहा है. तो कोई कभी ऐसी किसी फोरम के ऊपर आपने ऐसी कोई चीज देखी है कि जहाँ पे ये लोग बात कर रहे हो कि जी हाउ कैन वी कंबाइन दिस बिजनेस एजुकेशन विद द कंप्यूटर साइंस? I'll give you a very simple, जी प्लीज, and the most suitable example in my opinion. जी. That pertains to fintech. Fintech, okay. I'm sure people have been hearing about this jargon of fintech for some time. Okay. That is the latest. Okay. That is the latest application of computer science and technology in business. I see. Beautiful. Financial technologies. Financial technologies. You must have heard about Easy Pesa and Jazz and this and that. These are all applications of the technological context. In finance. Yes. Beautiful, sir. Good example, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल. डॉक्टर साहब थोड़ा सा जरा मुझे बताइए कि since you are heading this department, so what kind of opportunity that you are looking in for the students, और जो आपके prospects जो students हैं जो कि graduate होने जा रहे हैं, what are the इस वक्त in Pakistan context में अगर हम बात करें, what are the opportunities are there for engineers, computer engineers and computer science students, please? You see, when it comes to computer engineering, as the word engineering goes, normally we perceive that engineers, do come up with some kind of a development. Okay. So
although, I mean, in computer science, we are using not just, computing and technology, okay? And there are some other aspects as well. But overwhelmingly, when we talk about technology in general sense, then it means we are focusing on the application side of the application side. So computer engineers, although in general, uh, they are not so acceptable in general when it comes to, software development context, right? But they have a role, right? And their role is more focused on the development. For example, financial technologies, as I referred to, they can be employed, in the development of financial technologies or the maintenance of such kind of systems which deals with the financial technologies. Okay. Right. But by and large, computer engineers are well sought, okay, uh, in the context of hardware development, hardware design. Okay, hardware development and hardware design, or in the development of infrastructure. Okay. These are the three areas. Okay. Great. Okay. Right. डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप जो है कोई रिकमेंडेशन अगर आप देना चाहें पीईसी को या एनटीसी को करिकुलम के हवाले से अगर आप देना चाहें तो फ्लोर इज ओपन फॉर यू डॉक्टर साहब. Well, I think the current syllabi or the curriculum has been revised time and again. Okay. And I think this strategy is really commendable. Commendable. Sure. Yes. Okay. So we have curriculum development committees which have been, set up by different accreditation bodies. Okay. Like National Community Education Accreditation Council, NTC, National Technology Council, okay, and PEC, Pakistan Engineering Council, and so on and so forth. Let me just refer to the latest development. You must have heard about it, and I'm sure the same kind of programs have been adopted by, the UIT University as well. Okay. Incidentally, I came to this university Okay. to inspect Okay. the initiation of the software engineering technology program. Okay. So I think these areas are being strengthened, Okay. and I would strongly appreciate the efforts made by different accreditation bodies in this aspect. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जितनी भी डिस्कशन हुई होगी उससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा. हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.